Good morning and good evening students. Welcome to Commerce Campus Odisha. Today we'll start with the remaining part of MCQ discussions of business law and communication. 48 number je हम already देखिथिलु किछि proportion हे जेथिला हमरो. Now we'll start with 48, that is right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where the buyer becomes dash. तो आमे काली देखिथिलु मु कहिथिली right of unpaid seller किबा unpaid seller जहा भी concept जगह अछि सब जगह very important from exam perspective कहिगी. The right of stoppage in transit can be exercised by the unpaid seller where the buyer becomes insolvent. जितळको से देबाळिया हे जोची तो से कोन करि पारियो रास्ता रागा गुड्स गुडागो रखि देई पारियो. Then delivery of keys of a godown where goods are kept amount to dash. Delivery of keys of a godown where goods are kept amount to dash. सिंबॉलिक डेलीवरी काली कही मु एडा तो से जदि दब बोली कहले गोडाउन पूरा काटिकी दे दो ना कौन से कौन करिकी दब चाबीटा दब. Dash is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at auction sales. Auction sales रे तांको तांको भितरे झगड़ा अवॉइड करिया पे जहा भी एग्रीमेंट होची ताको हमें कौन कहबा नॉकआउट एग्रीमेंट कहबा. नॉकआउट एग्रीमेंट कहबा. It is a combination of buyers to prevent It is a combination of buyers to prevent competition among themselves at an auction sale. तो एटा टिके important point टा नॉकआउट एग्रीमेंट माने तांके तांके भितरे गोटे एग्रीमेंट टी करिवे तांके तांके भितरे गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ सेलर्स आसीबे जे कि कोन निज निज भितरे कंपटीशन लागेनी तांके तांकर प्राइस चेंज रे फाइट करिवे. In an auction sale the property shall be sold to dash. ऑक्शन सेल रे प्रॉपर्टी का दिया होची हाईएस्ट जे बिड करला ताकू दिया हबो आ कम बिड करले ताकू दिया होची कि नाही. Sellers can raise the price by fictitious bids in an auction sale with the help of dash. निरा नाड एडा Sellers can raise the price by fictitious bids. Fictitious bids माने कौन माने नोशनल से जा होचे कौन माने परमानेंट किमा रियल नाही नोशनल जिंस जागो माने से माने कहिए कि ए जिंसडा ए मार्केट रे एते रेट रे जाउछ तो आमे चाहूछु कोन एते रेट रे आमे स्टार्ट करू कहिगिरी तो से माने कोन करछन प्रिटेंडेडली सेडा को अधिक करछन माने गुटे लोक फेक रे बिड करनी गुटे लोक जतलो फेक रे बिड करची गुटे लोक जतलो ट्राई करची कोन अधिक प्राइस रे सेडा को सेल करया पे दैट इज प्रिटेंडेड बिडिंग. बट एडी कोन होची से जो पफर अच्छी पफर माने कौन आउ गोटे मार्केट रे एते रेट रे मिलियो ए जिंसडा कोडी मिलिबोनी ए जिंसर वैल्यू एतिकी ए जिंसर कॉस्ट एतिकी इमती इमती कहि कि से जिंसडा कोन करियो एनहांस कर दबो तारो प्राइस टा को से कांसेप्ट को हमें कहउछु कोन पफर. An auction sale is complete on fall of hammer हैला where the sale is notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person, the sale shall be treated as dash by the buyer. It is immoral. Se kon कहउची sale is not notified to the subject to a right to bid on behalf of a seller. माने गुटे seller हिसाब रे जदी से seller को न कहि के bidding कर दोची and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person. माने सेलर जे जे नोटिफाई करछन ना जे जे माने रजिस्टर करछनी तांको बिहाफ रे मु सेल करछि कहि कि के गोटे लोक जदी पळा आसिला आ ये जानि पारलानी कोन कहला से सेल लागु ये एक्सेप्ट कर देला तो इट इज कंप्लीटली इमोरल. बुझि पालो ना नाही इट्स कंप्लीटली इमोरल इमती हेबा कथा नाही. A valid contract of sale includes dash includes an agreement to sell. Okay. तापरे property in the goods in the sale of goods act means ownership of the goods. Property माने कौन ownership. Sale of goods act 1930 deals with बुझी पालो ना नहीं cash sales credit sales नहीं sales of goods in general खाली goods रो sales एटा केमती भी हेई पारे sales of goods in general. The events of force majeure render the contract of sale. फोर्स मैज्योर माने होची forcefully initiating a sale माने फोर्सफुली जदी काउ कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करैछि सिंपल मीनिंग तो सेटा कोन हबो हमरो void हबो ना voidable हबो void हबो.
Pledging of goods obtained on sale or return basis will pledging of goods obtained on sale or return basis will बुझिला ना बुझिलानी क्वेश्चन ना मते कहलो फर्स्ट रे बुझिलानी सेल और रिटर्न बेसिस रे गुड्स गुडा को दिया हेची ताको मु कहली काल रो एग्जांपल 15 डेज तो 15 डेज भितर जहाँ भी होची से एक्सेप्ट करियर अछि किंबा रिजेक्ट करियर अछि तो जदि से 15 डेज भितर एक्सेप्ट कर देला गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड रिजेक्ट कर देला गुड्स हैव बीन रिजेक्टेड 15 डेज एक्सीड हेयला ता पखरे गुड्स रखिची एक्सेप्टेड बट जदि ए भितर से गुड्स कोन करची कोडी गोटे गिरवा रखि देइची पैसा आन देइची तो से एक्सेप्ट करला वाला हला ना रिजेक्ट करला वाला हला तो इट विल कंप्लीट द सेल बुझिला okay then the term unpaid seller includes agent of the seller also बुझी पालो ना नहीं माने अनपेड सेलर वाली कहले अनपेड सेलर माने किए रे जाओ पूरा पेमेंट ता जाइनी तो अनपेड सेलर बिहाफ रे जदि जणे जे अछि एजेंट अछि से जदि पैसा कलेक्ट करछि लोकानंगरो तो इट इज द एजेंट ऑफ द सेलर्स आल्सो बुझी पालो ना नहीं then under section 11 of the SOGA 1930 the time of payment can be dash of the essence of contract time of payment can be by agreement between parties बुझी पालो ना नहीं टाइम ऑफ पेमेंट जहाँ भी हो सेटा दीटा पार्टी भितरे अग्रीमेंट रे भी हेई पारे an agreement to sell is executory ना executed executory कौन पे it has to be executed in the future executory contract माने कौन it has to be executed in the future has to be executed in the future बुझी पालो कौन हाँ माने सेमानंगर जहाँ भी राइट्स ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो जाइछ मतलब सेटा एग्जीक्यूट करियार अछि एट अ फ्यूचर डेट हाँ जणे कर देई पारिबो भी जणे करिकरी आ जणर पेंडिंग रहले भी किंबा दि जण जर पेंडिंग रहले भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट a contract for sale of future goods is agreement to sell काहेंगी फ्यूचर गुड्स माने कौन goods which are produced or manufactured goods which are produced or manufactured after agreement to sell माने once से कहिबो तापर से कस्टमाइज करियो कि बनेगी दबो कि जा बनेगी दबो जहाँ भी कि प्रोड्यूस करिकी दबो कि माने मैन्युफैक्चर करिकी दबो जहाँ भी हे पारियो माने एक्जिस्टिंग जिंस नै फ्यूचर गुड्स माने कोन इट विल बी प्रोड्यूस्ड तो सब एटा कोन हे पारे एग्रीमेंट टू सेल हे पारे संगे संगे से किन दे दो बुझला ना नहीं the definition of document to of title to goods is given SOGA is exclusive माने document of title to goods माने कोन गुड्स जहाँ भी अच्छी ओनरशिप कार सेटा को डॉक्यूमेंट रे लेखा अछि कोडा रेलवे रिसिप्ट हे परियो कि डॉक वारंट जहाँ भी हे परियो कि शिप बिल जहाँ भी हे परियो कि बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ भी हे परियो तो एजा सब कोन डेफिनेशन रे आउरी इंक्लूसिव कि एक्सक्लूसिव आगा करचंदी माने इंडिविजुअली लिखि पारिबे मध्य हैला ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स अ राइट टू जदि वारंटी कोन कंप्लाई होनी तो राइट को जिंस को दिया होची डैमेज क्लेम करिया पे तमे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करि परियोनी वारंटी जदि कोन ब्रेक हैला तो तमे कोन कर परियो मैक्स टू मैक्स पेनल्टी क्लेम करि परिबो हैला तापरे goods that are identified and agreed upon at the time of contract are specific goods obviously specific goods माने कोन आइडेंटिफाई करिवो एसेटेन करियो मेजर करिकि रखि देबो से लिखिस देखो आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तापरे under section 27 of the sale of goods act the terms good does not include
stock and shares ଲେଖା ହେଇଥିଲା a valid contract of sale includes agreement to sell ବୁଝିଲା ନା valid contract of sale includes agreement to sell ତାପରେ A had 10 horses. He agreed to sell one horse to B. This is a contract for sale of unascertained goods. कौन पे ता पाखरे 10टा हॉर्स अछि से गोटे हॉर्स बिकियाली कोच को हॉर्स एली कोई के मेंशन करछि कि नहीं दैट्स व्हाई इट इज unascertained goods ठीक है ध्यान दबो हैला ना काहेकि एडी गुड्स गुडा को से ना कहि देछि को टाइप रो गुड्स कहि देछि तो ascertained कहि के लिखि दबनी इट इज ऑलवेज unascertained goods क्लियर ना कोन डाउट अछि Then, a document issued by warehouse keeper or wharfinger stating that the goods specified in the document are in the warehouse or in his custody is called हैला माने warehouse रो जे ओनर अछि warehouse रो जे कोन जे गार्डियन अछि से गोटे डॉक्यूमेंट देला कोन कि एति एति गुड्स अछि मोर कस्टडी रे कहिगिरी आको हमें कहिया कोन warehouse keepers or wharfingers certificate बुझि पालो कौन क्वेश्चन रहेगा आंसर अच्छे सेड़ा कोच As per section 5(1) of the SOGA 1930, which of the following is recognized when a contract of sale is made? The price and delivery of goods may be contract of sale हेला अलगो price और delivery of goods टा postpone भी हे परियो installment भी हे परियो immediately भी हे परिबो depending on what contract contract रे जिंदी मेंशन हैला तमन तमन भितर जिंदी एग्रीमेंट हैला ता हिसाब रे कोड हेले भी हे परियो ऑब्वियसली बुझिला ना नहीं तापरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज एनफोर्सेबल ऑन okay in case of carriage of goods by sea where the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination the contract is called ex-ship contract बुझि पाला से सब कस्टमर अछि फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट सब जगह माने पोर्ट को आसिले गुटे पोर्ट रो एक्सक्लूड हेले गुटे तो एडी से कोन कोस देखो कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी where the seller has to deliver the goods to buyer at the port of destination माने कोन तमर जे डेस्टिनेशन कंट्री थिबो से कंट्री रो पोर्ट को जेतळ को रीच हबो सेतळ को जो डॉक्यूमेंट दिया होची व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज दिस इट इज एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट हैला गुड्स कैरी हैला सेलर डेलीवर करियर अछि गुड्स टू द बायर कोड डेलीवर करिवो ना बायर रो कंट्री रो डेस्टिनेशन जहां भी अछि ना डेस्टिनेशन कंट्री सेट रो पोर्ट रे से दबो तो एथि पई जो कॉन्ट्रैक्ट होची से कॉन्ट्रैक्ट रो ना होची एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट क्लियर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जाको इजाजत The process of identifying the goods and setting apart as per the intended quality or description is known as ascertainment मु कहितले ascertained goods तार आसी ascertainment माने हमको जो हिसाब रे दरकार हम जो क्वालिटी रे दरकार सिंथिया रे गुड्स हम बाछि की अलगा रे रखिबा क्लियर where the goods are known to be dangerous to seller and he also knows that the buyer is ignorant about it there is an implied warranty of buyer must be informed and the seller must warn the buyer हैला buyer को inform देबार अछि आ seller warn भी करियर अछि buyer को हैला then doctrine of caveat emptor does not apply when आ गोटे भी अछि seller ऊपर जतळ से रिलाई करला तार जजमेंट ऊपर मेडिसिन स्टोर जा एग्जांपल देइथिली तो परचेज बाय सैंपल डिस्क्रिप्शन किंबा सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दीडा जा केस रे आ बायर केमती जानिबो से तो सैंपल देला से हिसाब रे देआली आ सेतरे बायर बीवेयर कहले हबनी से निजे जाई के जो जिंस बाछुची ताको माने गोटे अपॉर्चुनिटी अछि से जिंस टेस्ट करिया पे फिर भी यदि से चेक करने ठीक से इज नॉट एबल टू चेक देन द डॉक्ट्रिन ऑफ caveat emptor is applicable
तापरे कौन है M sold goods to B. The payment was to be done after 1 month. B did not make the payment. The right of lien can be exercised by M when goods are M sold goods to B. M कागो बिकिला goods. B को बिकिला. Payment केबे करिया थिला? After 1 month करिया थिला. But B कौन करला? Payment करलानी. तो right of lien माने कौन? Lien माने कौन थिला? बढ़िया. सांगो lien माने कौन? जाननो? भूली चले मन रखिछ तो बड़ कथा राइट ऑफ लीन माने काली कहिथिली पुरा स्टॉपिंग अंटिल द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बुझला ना नहीं तो सेटा केबे ही पारियो व्हेन द गुड्स आर नॉट हैंडेड ओवर टू एनीवन जदी गुड्स का दे देथि और रखियो केमती तमे बुझला ना नहीं तमे जदी सी अधा पेमेंट दबो कहिची किबा अधा देगिरे आउरी अधा देनी किबा से कहिची मासे परे देबी कहिकी टोटल पेमेंटटा तो तुम गुड्स रखी दे पारियो से पेमेंट पूरा देला जे आ का ओडे देई देथियो तो कह ना ना मु रागी छि मो गुड्स मते दे देल से सुनियोगी हां ना नहीं तो गुड्स जते जे का को हैंडेड ओवर हेनी सेते जे कोन राइट ऑफ लीन ना एक्सरसाइज हे पारियो X purchased knives the knives were found to be blunt not suitable for cutting this is a breach of क्वेश्चन पूरा सिंपल लाउछ बट बहुत बहुत मीनिंग अच्छी क्वेश्चन रे पिलाने सब बी नंबर टा लिखी पड़ाइए एबे बुझियोनी से नाइफ रहेगा मु मार दी कौन है नाइफ्स जा केमती रे से कौन कहिछि नाइफ कहिछि ना नाइव्स कहिछि माने गोटे नाइफ ना कौन कहिछि चाकू चाकू तो चाकू ना चाकू जा कितने उड़ाक चाकू बहुत सारा चाकू है नाइफ्स माने कौन बहुत सारा चाकू तो बहुत सारा चाकू से कौन पे आने माने पियाज काटले से आलू काटियोनी आलू काटले से बैगण काटियोनी से आनतियो ना कौन चाकू तो चाकू चाकू इज चाकू चाकू गाड़ी करले कौन हम बुझला ना नहीं तो एते जा से कौन पे आनथियो नाइफ्स कौन पे आनथियो बिकिया पे आनथियो ऑब्वियसली तो नाइफ्स कौन ब्लंट थिला माने एते शार्प नथिला हैला गधड़िया नाइफ्स जगह सब तो ये कौन दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी माने कौन फर्दर यूज और सेल रीसेल देख लो मुंड तो नाई मोर केजी रेट रे बिकी देला कौन हम शिवानी बुक स्टोर बिकी देछि मर्केंटाइल एजेंट माने कौन हु सेल्स गुड्स consigns for the purpose of sell or buys goods or raise money on security of goods mercantile agent माने कौन एग्रीमेंट हिसाब रे गुड्स सेल करियो कंसाइनमेंट करियो बाय गुड्स बाय करिवो मनी रेज करिवो गुड्स प्लेज करिवो जहा भी करिवो सी करिवो कौन गुटे एजेंट कैपेसिटी रे बुझला ना नहीं CIF contract is also known as contract for sale of document बुझला एटा कस्टम रो गोटे येडा contract for CIF full form da custom insurance and freight cost insurance and freight something like that so eta kon it is a contract for sale of document then goods the acquisition of which is contingent upon the happening or non happening of certain event will be treated as contingent goods एते भलो क्वेश्चन से पचरिया कंटिजेंसी माने कौन जिनस हे पारे ना हे पारे जिंदगी मो हाइट बढ़ी पारे ना बढ़ी पारे कौन एक्सरसाइज करी फिर भी किछि हे पारे the definition of document of title of goods is given in the sale of goods act is exclusive अच्छा which of the following rights are available to unpaid seller against the goods मते को एथि आंसर कौन एला रे हसछु ना कौन तार भूलियली स्वागत कौन एला स्वागत लाफिंग
अनपेड सेलर को देखिए एते हसछु से खराब भाबियोनी कोडा which of the following rights are available to an unpaid seller against the goods आंसर थिबोनी कि आओ एथरे कोआ देखिकी फर्स्ट तीनटा जा ना आओ आंसर मु हेले देनी आंसर इज ए हला where the third party fails to fix the price but the buyer has received and appropriated the goods and the buyer liable to pay थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करि परने रे हैला बायर कोन गुड्स रिसीव करला आउ गुड्स रो गोटे एस्टिमेट अछि माने केजी 2 केजी 3 केजी 10 केजी कि टन जहा भी हे पारियो तो से केते पेमेंट करे अछि मार्केट रे जति के प्राइस चलछि रीजनेबल प्राइस हे पारियो बुझिला ना नहीं this is the reasonable price he has to pay breach of warranty gives a right to जदि क्लेम न्यू गुड्स नहीं देन क्लेम डैमेजेस हे पारिबो बट न्यू गुड्स और डैमेजेस अच्छे न्यू गुड्स फर्स्ट प्रेफरेंस हो कौन कहले थिला कि हेले बोथ हबो बट एक्चुअली वारंटी थिले लोक कौन करछन मते कहलु नॉर्मल केस रे वारंटी थिले लोक कौन करछन डैमेजेस क्लेम करछन ना जिनसे एक्सचेंज करछन हेडी अच्छी हां तो दीडा जगह हबो क्लेम न्यू डैमेजेस भी हबो और न्यू गुड्स भी हबो से गोटे गोटे अटेम्प्ट रे गोटे गोटे आंसर कंसीडर करछ जहां भी लिखले हबो गुड्स भी हबो डैमेजेस भी रे रे भाई ना स्पीड हो छ seller means a person who sells or agrees to sell goods which of the following which of these is a document of title to goods bill of lading हैला एजा सब डॉक्यूमेंट और टाइटल गुड्स नहीं एजा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा हैला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा transfer of documents of title to goods sold to buyer amounts to एटा टिके देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन transfer of documents of title to goods sold to buyer amounts to dash बुझिला नहीं चाबी देले जहा डॉक्यूमेंट देले ताहा जदि जोटे लैंड रजिस्ट्रेशन होचे से कोन दबो डॉक्यूमेंट दबो घर जदि बिकिला से कोन दबो घर चाबी दबो हैला इट इज सिंबॉलिक बट जदि से कहि थांदा कोन तोर मोर जो लोन डा अछि कि मैं तोर मोर जो बिका हैला जो जिंस तते मिलेबो सेडा आउ जणा पाखरे अछि तो सेडर जे कलेक्ट कर दे तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी The rule as to passing of property as laid down in section 20 of SOGA shall apply when passing of property एटा सेक्शन नंबर रे क्वेश्चन पचाच सेक्शन 20 रे कोन अछि कहि से पचाच मन रखियो पड़े an act by which an intending bidder is discouraged or dissuaded ali कहले prevented from bidding in an auction sale माने गोटे इंटेंशन अच्छी ताको बिड करिया पई ताको कोन से गोटे कथार्ता रे कि कोन एक्टिविटी रे ताके डिस्करेज कर देले आ कोन कर देले प्रिवेंट भी कर देले बिडिंग रु तो एटा कोन हबो दिस इज डैम्पिंग क्लियर in case of carriage of goods by sea where the seller has to deliver goods to the buyer at the port of destination the contract is known as ex ship contract
Question repeat. But goods are known to be dangerous to the seller and he also knows that the buyer is ignorant about it. There is an implied warranty that he has to inform about the dangerous nature of goods and must warn the buyer. Price must either be certain or definite or determined by some method or criterion prescribed by valuation of a third party. For terms not defined in the Sale of Goods Act, reference is made to जो Sale of Goods Act जदि किछि जिंस मेंशन हेनी तो कोड जिवो Indian Contract Act काहेकि एडा ओरिजिनेट हेछि Indian Contract Act. Anil sold and delivered 20 kgs of bajra to Sunil. Sunil, instead of expressing his acceptance of sugar in writing or by words, sent the same to flour mill. The acceptance of goods is ताकू देला रे सी ना पाटरे कहला ना लेखी कहला कि मु एक्सेप्ट करछि कहि से कोन कहला का उडे देई देला से जाई कि फ्लोर मिल रे देई देछ आ सेडा एक्सेप्ट करला आलिया हला ना रिजेक्ट करला आलिया हला ऑब्वियसली एडा कोन इंप्लाइड एडॉप्शन माने से एक्शन डा असम्पशन माने इंप्लाइड सेडा दुसचे हमगु ना स्वागत दुसुनी दुसचे ना which of the following is not considered as goods पैसा पैसा a contract for कौन है ला जुबली से जो सब एंटिक पीस जागो माने हिस्टोरिकल आइटम गुडागो contract for sale of goods which provides that property would pass to buyer on full payment of price and execution of sale deeds कौन गोची sale of goods which provides that property would pass to the buyer on full payment of price and execution of sales deed. It is known as हैला कौन पूरा ठीक बुझीचु बट से आगड़ा आगे कहि देछि कि एटा कॉन्ट्रैक्ट भीतर जदि एति कि जिंस मेंशन हेछि त सेडा कोन एग्रीमेंट पे से implied warranties कौन कौन enjoyment of undistributed possession disclosure of dangerous nature quality or fitness by usage of trade एजा सब होछि कोन हमरा implied warranties बुझि पाला implied warranties under SOGA which of the following are implied warranties implied warranties नहीं clear कौन है लाउन जाओ कौन डाउट अच्छी So this is the end of bit questions of Sale of Goods Act. In the next class we will be discussing the Negotiable Instrument Act. ठीक अच्छी, thank you so much.